Hello everyone. In this video, we are going to discuss another neurodevelopmental disorder, which is communication disorders. In this video, we will discuss language disorder. So let's get started. सबसे पहले तो कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में हमारे पास क्या क्या इंक्लूड है. So communication disorder include deficit in language, speech and communication. Speech is the expressive production of sounds and includes an individual's articulation, fluency, voice, and resonance quality. Language includes the form, function, and use of conventional system of symbols. For example, spoken words, sign language, written words, picture in a rule-governed manner for communication. And communication includes any verbal and non-verbal behavior, whether intentionally or unintentionally, that influence the behavior, ideas of or attitudes of another individuals. So we will discuss language disorder now. Diagnostic criteria, which is explained in DSM-5. The first diagnostic criteria is persistent difficulty in the acquisition and use of language across modalities, for example spoken and written sign language, or other due to the set in comprehension or production that includes the following. Number 1, reduced vocabulary. Number 2, limited sentence structure, ability to put words and word ending together to form sentences based on the role of grammar and morphology. Impairment in discourse, ability to use vocabulary and connect sentences to explain or describe a topic or series of events or having a conversation. Criteria number 1 के according, persistent difficulties in acquisition and use of language across modalities, यानी पर्सन को persistently difficulty हो किसी लैंग्वेज को एक्वायर करने में और उस लैंग्वेज को यूज़ करने में. इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं. पहली चीज़ रिड्यूस वोकेबलरी, यानी इतनी कम वोकेबलरी हो कि वो अपनी बात कन्वे ही ना कर सके. लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, इतना लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर हो कि वो ग्रामेटिकली मॉर्फोलॉजिकली चीज़ों वर्ड्स को ऑर्गेनाइज ना कर सके. इम्पेयरमेंट इन डिस्कोर्स, यानी इम्पेयरमेंट डिस्कोर्स यानी वोकेबलरी को कनेक्ट करना, उससे सेंटेंस बनाना, इवन के अपने साथ हुए किसी वाक़ये को, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल हो जाए, इवन कन्वर्सेशन भी ना कर सके. सेकेंड इज लैंग्वेज एबिलिटीज़ आर सब्सटेंशियली एंड क्वान्टिफाइबली बिलो दोज एक्सपेक्टेड फॉर एज, रिजल्टिंग इन फंक्शनल लिमिटेशंस, ineffective communication, social participation, academic achievement or occupational performance, individually or in any combination. यानी पर्सन अपने एज ग्रुप के दूसरे लोगों के मुकाबले में बहुत ही लिमिटेड उसकी वोकेबलरी हो, बहुत लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर हो और अपने एज ग्रुप वालों के साथ वो कम्युनिकेट ना कर सके, उनके जैसे बात ना कर सके. Fourth one is onset of symptoms is in the early developmental period. The difficulties are not attributable to hearing or other sensory impairment like motor dysfunction or another medical or neurological condition and are not better explained by intellectual disability or global developmental delay. यानी onset language disorder का developmental period है और किसी को लैंग्वेज डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं किया जाएगा अगर उसे कोई हियरिंग प्रॉब्लम है, कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट है, कोई मोटर डिसफंक्शन है, अनदर मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की सूरत में भी लैंग्वेज डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं होगा. लैंग्वेज डिसऑर्डर की कॉजेज़ अननोन है, लेकिन जेनेटिक्स एंड न्यूट्रिशंस में प्ले अ रोल, बट दीज एक्सप्लेनेशंस आल्सो हैव नॉट बीन प्रूवन येट. Language developed involve the ability to hear, see, comprehend, and retain information. This process may be delayed in some children who eventually catch up with peers. A delay in language development may be related to hearing problem, brain injury, damage to the central nervous system. किसी को hearing problem है, उसको सुनने में मसला है, तो उसको language disorder हो सकता है. brain injury की वजह से हो सकता है,
डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है तो न्यू लैंग्वेज डिसऑर्डर हो सकता है। Sometimes delayed language may accompany other developmental problems such as hearing loss, autism, a learning disability. Language disorder is not necessarily related to a lack of intelligence. Experts try to identify the cause when language development does not happen naturally. इसलिए अगर किसी को लैंग्वेज डिसऑर्डर है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पर्सन इंटेलेक्चुअल डिसेबल है। How can we address and ease these symptoms? The disorder is often treated through the collective efforts of parents, teachers, speech language pathologists, and other health professionals. लैंग्वेज डिसऑर्डर को एड्रेस करने के लिए, सिम्टम्स को ईज करने के लिए टीचर्स, पेरेंट्स, साइकोलॉजिस्ट, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स की एफर्ट ज़रूरी हैं। The first course of action is to visit your doctor for a full physical exam. This will help rule out or diagnose other conditions. मेडिकल एग्ज़ाम सबसे पहले करवाना चाहिए ताकि पता चले कि इसके साथ कोई और प्रॉब्लम नहीं, कोई और सेंसरी इम्पेयरमेंट तो नहीं। अब आते हैं थेरेपी की तरफ, विच इज़ लैंग्वेज थेरेपी। द कॉमन ट्रीटमेंट फॉर लैंग्वेज डिसऑर्डर इज स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी. Treatment will depend on the age of your child and the cause and extent of the condition. For example, your child may participate in one-on-one treatment session with a speech language therapist or attend group sessions. The speech language therapist will diagnose and treat your child according to their deficits. Early interventions often plays an important role in successful outcomes. Home care options क्या क्या हैं? Working with your child at home can help. Here are some tips also. Speak clearly, slowly, and concisely when asking your child a question. Wait patiently as your child forms a response. Keep the atmosphere relaxed to reduce anxiety. Ask your child to put instructions in their own words after giving an explanation or command. Frequent contact with teachers is also important. Your child may be reserved in class and may not want to participate in activities that involves talking and sharing. Ask the teacher about class activities in advance to help prepare your child for upcoming discussions. पेरेंट्स को चाहिए कि वो इन टिप्स को फॉलो करें कि एक तो अपने बच्चों से, अगर तो वो लैंग्वेज डिसऑर्डर का शिकार है, उससे आराम से बात करें ताकि बात उसकी समझ में आए। लफ्ज़ को अलग अलग करके समझा के बात करें और उनको टाइम दें कि वो उस बात को एक्सप्लेन कर सकें अपने अल्फाज में। दूसरी चीज़ हो सकता है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर की वजह से आपका बच्चा स्कूल में बहुत रिज़र्व हो, वो बातचीत ना करता हो ज़्यादा, वो ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना लेता हो जहाँ पर बोलना पड़ता हो, जहाँ पर शेयरिंग करनी पड़ती हो। सो पेरेंट्स को चाहिए कि वो टीचर्स से पहले ही क्लास एक्टिविटीज़ के बारे में पूछ लें ताकि वो अपने बच्चे को घर में ट्रेन करें नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए, ताकि उसके बच्चे को एम्बेरसमेंट फील ना करनी पड़े। सो हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।